Hello, all my dear students, all radio journalism students. कैसे हैं आप सब? Doing good? Wonderful. Okay, how to make a radio program, that's what we have covered. And I'm sure it must have had helped you. अब today I'm going to talk about voice modulation because it is very important. Reason being, अब आप लोग अपने projects को record करोगे. So when you're recording, it's very important for you to understand practically what voice modulation is. See, there is one part which is theoretical, okay? So you can learn and you can just pour out on your answer sheet and you'll get your marks. That's one thing. But practically, you have to learn that when you are recording, when you are delivering. Yep. Okay. So what is voice modulation? In very simple words, वॉइस मॉड्यूलेशन, जब भी हम एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, पहली चीज हम उस स्क्रिप्ट को क्यों लिख रहे हैं, हम अपने लिसनर के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो उस स्क्रिप्ट में क्या है, एक मैसेज है, और मैसेज किसके लिए है, लिसनर्स के लिए है। लेकिन इस मैसेज, लिसनर और आपके बीच एक लिंक एस्टैब्लिश करता है हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन। एंड व्हाट इज वॉइस मॉड्यूलेशन? इट इज दैट स्किल विच हेल्प्स अस, put emotion into that message that we are conveying. हम किस emotion के साथ उस message को convey कर रहे हैं, वो हमारी आवाज को एक rhythm देता है. It gives it our voice that rhythm. It puts that emotion into that message which we are conveying to our listener. So voice modulation is simply that art. Now some people, and it is not something that we have to cultivate or we have to develop. I believe हम सबका एक natural style of delivering our talk होता है, or we all have our ways of putting our things forward. We all have our special rhythm in which we talk. बस हमें उसी को थोड़ा सा होन करना है, उसी पर हमें improve करना है, ठीक है। क्योंकि अगर ये emotion नहीं होंगे, like the way right now I'm talking to you, or you were listening to me, so I'm assuming that you're listening to me with patience. You are learning something out of it, right? When I'm conveying this to you, I'm considering you're very important. I want this lecture to reach you with impact and with conviction. So what I have done, my voice modulation is putting emotion into it, and now it's reaching you. It's that simple. Okay, now what exactly is voice modulation? Then what is accent and what is pronunciation? So voice modulation, I've already told you. Now pronunciation. Now if we talk of pronunciation, it is basically pronunciation is the correctness of the word, right? हम कितने clarity और कितनी करेक्टली हम एक वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। भाषा हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, या कोई भी भाषा हो, जो शब्द, जो उसका स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड उच्चारण है, जो उसका तलफ़ुज़ है, दैट इज व्हाट प्रोनाउंसिएशन मीन्स। ओके, नाउ व्हाट इज एक्सेंट? नाउ एक्सेंट इज एक तरीका, अ वे, जिसमें एक इंसान बात करता है, या ग्रुप ऑफ पीपल दे टॉक. Like if you go to Punjab, people have a particular accent. You go to South, people have a particular accent. You go to Bihar, people have a particular accent. You listen to an American, they have a particular accent, right? So we all have. So एक इंसान का अपना accent हो सकता है, एक इंसान accent को develop करता है. But I always believe जो आपका original accent होता है, वो, I mean, that becomes your what do you call? That becomes your style statement, because it always remains the same, and you maintain that integrity of the, of that style in which you are delivering your talk. So that is accent, है ना। और अगर हम accent को करने की कोशिश करते हैं, किसी और का accent कॉपी करने की हम लेट से कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या होगा, हम बहुत अच्छा भी बोल सकते हैं, उसमें there is nothing wrong about it, लेकिन क्या होगा, एक जगह हम फॉल्टर कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारा ओरिजिनल एक्सेंट नहीं है, ठीक है। अब इसमें भाषा, अगर हम भाषा की बात करें, जैसे हिंदी और अंग्रेजी की अगर हम लोग बात करें, बिकॉज जो मेरे करियर की शुरुआत हुई, दैट वाज एज एन इंग्लिश कंपेयर ओनली, एंड आई यूज्ड टू होस्ट इंग्लिश प्रोग्राम्स. ओके, आई बिगैन माई करियर विद English youth program, and then FM maybe we used to be bilingual, and that point of time also, like there were English programs we used to do, तो उसमें अंग्रेजी का पोर्शन ज़्यादा होता था. अच्छा, सेकेंड चीज़ अब यहाँ पर हुई, जैसे हमने अंग्रेजी पढ़ाई, आई टॉट लिटरेचर, ठीक है, तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में, अब हिंदी में क्या है, जैसे हम शब्दों को लें प्रणाम, या हम लें वालेकुम अस्सलाम, राइट, या नमस्कार,
ये हम कंप्लीट वर्ड्स बोलते हैं, प्रणाम, ड़ इज हियर, राइट। बट अगर आपको हम एक स्क्रिप्ट दें टू रीड इन इंग्लिश, सो वो ऑटोमेटिकली, बिकॉज ड़ इज नॉट देयर इन इंग्लिश, right? That pronunciation is not there. It's N. So it automatically it becomes N. It happens automatically when you are reading or when you are speaking in English. ठीक है? तो that is also what you have to understand. इसलिए कहते हैं जब आप हिंदी बोल रहे हैं तो ऐसा लगे कि आप सिर्फ हिंदी ही बोलना जानते हैं। आप जब अंग्रेजी बोल रहे हैं तो आप उसको बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशंस के साथ बोलिए। और भाषा के लिए, सीखने के लिए बायसेस नहीं होने चाहिए। हमें हर भाषा को सीखने का अगर मौका मिलता है तो हमें सीखना चाहिए। और आज भाषा को सीखने का सबसे ज़रूरत हमें अभी क्यों लगती है? क्योंकि now we all have become global citizens, so knowing as many languages as we can learn or improve our skills upon, that is a great thing. Okay, तो ये हमने आपका concept clear किया, modulation and then your pronunciation and your accent. So we are not going to confuse. अच्छा, हमें एक चीज़ इससे अलग हम आपको बता दें, हमने देखा है बहुत लोग दूसरों के एक्सेंट्स का मजाक उड़ाते हैं ना, तो वो आई बिलीव मेरा एक एज अ टीचर, एज अ मेंटर, आई विल जस्ट लाइक टू से वन थिंग, वी शुड नेवर मेक फन ऑफ एनी वन, ठीक है? And never do that, because it will always keep you on the right track with confidence. Okay, so that was my moral guidance in this talk. Okay, तो अब हमने वॉइस मॉड्यूलेशन यानी इमोशन समझ लिया। अब अगर इमोशन माइनस हो जाएगा तो हमारी चीज फ्लैट हो जाएगी, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ गुड गर्ल, आई एम अ गुड गर्ल, आई एम अ गुड गर्ल, दैट साउंडिंग वेरी रोबोटिक। आई एम अ गुड गर्ल, आई एम अ गुड गर्ल। धीमे भी बोलिए, आई एम अ गुड गर्ल, है ना? अच्छा, बच्चे कैसे बोलेंगे? जब छोटे बच्चे होते हैं उनको कैसे सिखाया जाता है? आई एम अ गुड गर्ल, आई एम अ गुड गर्ल, are you a good girl? तो बच्चों को ऐसा हम सिखाते थे in order to fascinate them, in order to draw their attention, right? In order to keep them engaged, with the eyes movement and all, right? So, but as we grow, it becomes more matured and it becomes more, what you call, graceful. Okay? Now, voice modulation हमारे इमोशंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम गुस्सा होते हैं तो हम कैसे बोलते हैं, हम दुखी हैं तो हम कैसे बोल रहे हैं, हम बहुत एंथुजियास्टिक हैं, बहुत उत्साह से भरे हैं तो हम कैसे बोल रहे हैं। अब यहाँ पर तो हमें अपनी स्क्रिप्ट पर ध्यान देना है। हम वो स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए लिख रहे हैं, फीचर के लिए लिख रहे हैं, डॉक्यू फीचर के लिए लिख रहे हैं, एडियो ड्रामा के लिए लिख रहे हैं, हमारी वो ट्रैवलॉग स्क्रिप्ट है, राइट? लॉट मेनी थिंग्स, है ना? जो भी फॉर्मेट पर आप काम कर रहे हैं, आपका वो हेल्थ प्रोग्राम, मैगजीन प्रोग्राम, वॉट एवर, आपकी वो टॉक है, राइट? सो you have to what you call practice before reading out your script, and I think you should do a lot of practice before you are giving your final output. एक चीज और, ये भी आपका प्रोजेक्ट वर्क है, you will get your marks and all, but I think आप सब अपना प्रोग्राम ऐसे बनाइए, ये सोचकर बनाइए कि उसमें वो हर स्टैंडर्ड्स पर एकदम फिट हो और वो ब्रॉडकास्ट होने के उसमें कोई कमी ना हो, वो बिल्कुल ब्रॉडकास्ट हो सके प्रोग्राम। ओके, तो अपने हर वर्क को आप बिल्कुल ऐसे करिए एज इफ दिस प्रोग्राम विल बी गोइंग ऑन एयर, राइट? सो गिव योर बेस्ट टू इट। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, हम अपनी वॉइस को कैसे मॉड्यूलेट करें, ठीक है? मतलब हाउ टू मॉड्यूलेट आवर वॉइस, ठीक है? तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि वॉइस मॉड्यूलेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? इसलिए इम्पॉर्टेंट है, वो ऑडियंस को आपसे बांधे रखता है, आपको एक आपकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस पता चलता है, आपका कन्विक्शन उससे पता चलता है, आपके एक्सप्रेशंस उससे समझ में आते हैं, ठीक है? और आप अपनी बात पर, अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन से एक वर्ड या एक वाक्य पर या किसी एक इमोशन को जो आपके स्क्रिप्ट में है, आप उस पर एक्सप्रेस भी कर सकते हैं ना। वॉइस मॉड्यूलेशन, फर्स्ट थिंग आई वुड से कि डोंट ट्राई टू कॉपी एनीवन, क्योंकि हम सबका अपना पेस होता है, राइट? तो यू जस्ट प्रैक्टिस इट। आप क्योंकि मेलोड्रामेटिक नहीं होना है
है ना. बहुत से लोग होता है माइक्रोफोन पे जाते हैं, दे बिकम मेलोड्रामेटिक, क्योंकि वैसे भी अभी जो हमारा ट्रेंड है, दैट द ट्रेंड इज ऑफ बीइंग वेरी नेचुरल एंड ओरिजिनल. यू शुड साउंड ओरिजिनल, यू शुड साउंड गुड, यू शुड साउंड हैप्पी, यू शुड साउंड पेपी, दैट काइंड ऑफ थिंग, डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ योर स्क्रिप्ट. ठीक है ना. अब ऐसा ना हो कोई सीरियस स्क्रिप्ट है एंड माई वॉइस इज ओवर एंथ्यूजियास्टिक अबाउट इट, और वेरी वेरी एंथ्यूजियास्टिक अबाउट इट. ठीक है. अच्छा, एंथ्यूजियाज्म का मतलब चिल्लाना नहीं होता है, right? Because microphones, when we are recording, they are very very sensitive. So it's not that we are shouting, so we are sounding very enthusiastic, right? So it's not like that. Your word conviction, because बहुत सारी चीज़ें जो अभी हम चारों ओर अपने देख रहे हैं, तो चिल्ला के बात करना. ठीक है, कि अगर हम चिल्ला के बात करेंगे तो हमारी बात में पार आएगा नहीं. पार हमेशा आपके कंटेंट में होता है. Okay, we don't, for example, I will say, like, if you see the comedians, some comedians, they act so flawless, they are so spontaneous. और कुछ कॉमेडियंस को आप देखिए, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आपको हंसाने के लिए. सो दिस इज द डिफरेंस. सो एक्सेप्ट द स्टाइल, एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड द स्टाइल विच इज कमिंग वेरी वेरी नेचुरल टू यू, बिकॉज दैट इज यू. We need new voices, we need new styles. Okay, so that's one. Okay, now and then we should also know how to control and how to manage our emotions. Let's say मैं बहुत गुस्सा हूँ लेकिन मुझे अपना स्क्रिप्ट पढ़ना है, तो I should have that, that patience and that strength to shoo away all that what is there at the back of my mind, just to put the delete button, and just to feel fresh and good and updated, and to give our 100% to our to our delivery of the content that we are going to record. Okay, so that is the thing. Now in voice modulation, as we were talking about, that how to learn that. So I've already told you, be natural, be nice. You should know एक news, एक seriousness, एक serious grace के साथ पढ़ी जाती है. There is no fun about the news. आप भले अभी हम जो कुछ देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है कि that it's बहुत ज़्यादा आप एक्साइटेड होके कोई न्यूज़ बोल रहे हैं, या आपके इमोशंस कभी भी नहीं आने चाहिए when you are a news anchor, because your job is simply to tell the people what is happening around, and of course, to show the correct picture, either through words or through the visuals or through your talk audio visual. Your job as a news anchor to tell the people what's the truth is. You are just a medium, who is bringing that truth to the people. When you're holding debates and discussions, you are the moderator who has to keep everything very balanced and let the outcome come. Let the outcome be decided by the people. Let people decide. Why to influence somebody? Okay, pressurizing others by your words and your thought process. That shouldn't be there. Okay, I can tell you because you are students and you should know. हम जिंदगी में क्या कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन क्या सच्चाई है वो एक हमें पता होनी चाहिए. ठीक है? Okay, fine. Now remember 3 P's and 1 T. 3 P's and 1 T. तो 3 P's में क्या आएगा? पिच. पिच क्या होती है? हमारी जैसे हम गुस्सा हैं. What the hell have you done here? Automatically my pitch, my volume has gone up. Right? Why the hell are you here? Right? My pitch has already gone up. Right? Now I'm sad. How are you? Not good. Automatically it has gone sad. Now you want to, share something secret. आपको कोई सीक्रेट अपने फ्रेंड से शेयर करना है. You whisper, no, it wasn't like that. Yeah, automatically. So see, emotions, the talk at the back, the content, it is all, it is all controlling your pitch. Okay, but as a person on the microphone, as a presenter on the microphone, your job is to see the flavor of the program, the need of the program, and then of course your script is going to decide your pitch. It's like it has to be good, it needs to be pleasing, nice and impactful, right? So microphones, as I've told you, they're already very sensitive. So you
आपको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा इंथ्यूजियाज्म दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको थक नहीं जाना है, पसीना नहीं आ जाना when you're just delivering your talk. So be nice, be natural, be calm, right? And then convey your talk. Because that is how it should be. बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हो रही हैं, जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, I don't know, but actually it needs to be calm, nice. Acha, that was the first P I talked about, pitch, right? The second one is, let's talk about pace, yes. And pace is your speed, right? हम सब की बोलने की एक स्पीड होती है और वो एक अपने आप में एक आगे चल के आपका एक अपना स्टाइल बनता है. जैसे great legendary actor देवानंद साहब, right? बहुत जल्दी उनका जो पेस था, it is a speed. His words used to come very quick. He was he was a pacey, speedy talker. His dialogue delivery, बहुत सारे words जल्दी जल्दी बोलते थे. तो that was his style. There's some people जो बहुत धीमा, मतलब उसका speed words का काम है, but I think it should be normal. What I'm trying to tell you is that it's your style and you have to discover your style. You have to discover your USP, the USP of your voice, right? So that's the pace. तो और इम्प्रूवमेंट ऑफ कोर्स सब लोग अपने आर्ट को पॉलिश करते हैं. जैसे एक प्रोग्राम है शायराना है तो आप धीमे बोलते हैं, वही एक अंग्रेजी का प्रोग्राम है, पेपी है, पॉप सॉन्ग्स चलाने हैं आपको तो आप थोड़ा सा फास्ट बोलते हैं. लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि आपका एक अपना स्टाइल बहुत मदद करता है आपके पेस को इंटैक्ट करने में और आपकी एक अपनी इंडिविजुअल ग्रेस एज अ ब्रॉडकास्टर को डेवलप करने में. सो दीज वर द टू पीस. नाउ थर्ड इज द पॉज. हर अच्छे कम्युनिकेटर को, हर अच्छे ब्रॉडकास्टर को एक बहुत बड़ा आर्ट उसके अंदर होता है, व्हेन टू टेक अ पॉज. जबकि एक सेकंड का साइलेंस भी ऑन एयर इज कॉल्ड डेड एयर, राइट? लेकिन कभी कभी जब हम ड्रामा कर रहे होते हैं, जब हम एक ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट बोल रहे होते हैं, जैसे आप लोग ओल्ड मेलोडी काइंड्स प्रोग्राम्स हम लोग जब हमारे बहुत सीनियर ब्रॉडकास्टर्स करते थे, व्हेन यू आर लिसनिंग टू देम, तो उनका कहते ना, इवन साइलेंस हैज इट्स ओन लैंग्वेज. बट वो साइलेंस कहाँ पर आ रहा है? वो घबराहट का साइलेंस है, मुझसे कुछ मिस हो गया, सब कुछ बंद हो गया यहाँ पर और मैं एयर पर हूँ, कुछ नहीं जा रहा है, वो पॉज. और आपके बोलने में पॉज, लाइक फॉर एग्जाम्पल, I have this book of the Associated Press before me and I was just going through the punctuation. So it's written over here. Punctuation in skilled hands is a remarkably subtle system of signals, signs, symbols and wings that keep readers on the smoothest road. है ना? तो हमने यहाँ पे punctuation की बात क्यों की? क्योंकि हम लिखने में तो punctuation लगा सकते हैं, comma, फुल स्टॉप, सेमी कोलन. लेकिन जब हम बोलते हैं तब तो हम ऐसे नहीं बोलते ना कि राशि इज अ गुड गर्ल, full stop, or Rashi is a bad girl, full stop. We don't say like that. So we pause. Yeah, she's a good girl. Yeah, I know that. There's this pause, right? Even when we are reading out a script. क्योंकि pause हमें हमारे script को it gives the weight, it gives it an impact, it draws the attention of the audience, your listeners towards you, right? तो एकदम बिना सांस लिए नहीं, सांस लेके और बहुत आराम से हमें अपनी स्पीच बिना इमोशंस के डिस्टरप्ट किए हुए इमोशंस को हमें अपनी स्पीच को पढ़ना है. तो दीज वर द थ्री. तो जो पंक्चुएशन का काम हमारे रिटन स्क्रिप्ट में होता है वो हमारे बोलने में होता है ना? हम रास्ते में जा रहे थे तो वहां पर एक हमें बड़ा सा शेर मिला. शेर बहुत सुंदर था. शेर के साथ उसके 2 बच्चे भी थे. 2 बच्चे थे. 2 बच्चों का क्या नाम था? एक का नाम था जीतू, एक का नाम था रीतू. अच्छा, क्या रीतू की मम्मी उसे बहुत प्यार करती थी? अरे, मम्मी के लिए तो दोनों बच्चे बड़े प्यारे थे. तो अगर आप सुन रहे हैं तो the pauses are coming, right? And 3 P's and 1 T, and that is your tone, right? And tone is the power of that emotion, with which you are conveying your talk. That decides the tone. Okay? Now, when we talk of electronic media, of course, when we talk of voice quality, I think voice that has resonance, right? And
एंड वी ऑल, अगर हम सब एक ही पिच, एक ही वॉल्यूम पर बात करें, ठीक है, एक ही एक्सेंट में बात करें, तो भी हमारी आवाज़ें अलग अलग सुनाई देंगी. वाई? बिकॉज it's because of its resonance impact. All right, so this is all for voice modulation. I have my book here, a gift, and इसमें कुछ हमारी broadcast poems थी, All India Radio Allahabad. So I will just like to read a passage for you, है ना, just to tell you what voice modulation is. Yeah, इसमें बहुत सारे punctuation marks हैं. देखिए, ये टॉपिक है, द नेम ऑफ द चैप्टर इज फाइटिंग अगेंस्ट कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट इट वुड हैव बीन लाइक इफ द स्काई एंड द अर्थ वुड हैव एक्सचेंज्ड देयर प्लेस? You would have been reading this chapter while gliding on sky, floating through the clouds, right? Isaac Newton's law of gravitation would have lost all its value, and the lifelong researchers would have gone sheer waste. What I mean to say is, God's world is perfect, and in His world, imperfections do not exist. मेरे लिए इसको पढ़ना आसान रहा क्योंकि ये किताब हमने conversational tone में लिखी है. Right? I have written it in a conversational tone. So when you are writing a script, you write as if you are delivering it or speaking it to your audience. So that's the voice modulation. I just want, this is one poem. I'm sorry. There's one poem here at the end. Resolution. ठीक है? Make me a promise, my dear me. Lots of good habits to reap and believe. No casual approach, no flimsy excuses. It's going to be a resolute time to retrieve. Waking up early without an alarm, going for a jog after bowing to God, lending a hand to the ones who need is all this heart that is decided for me. Many a promise have been broken so far, many a friends couldn't walk so far. One promise with fulfillment is all I commit, to be my best friend is the belief I let. Now here, अगर आप देखो मैंने तेज पढ़ा, तो that is what is helping you to decide pace, right? Okay, now pitch. Life is a journey I've always believed. One more time, I'll take it without retreat. Many pilgrimages I have to undertake. Many lives I have to live without being fake. Let's talk about the tone. I've loved humans to a degree beyond. Now it's a time for flowers, animals, birds and plants. A sapling to grow by the end of the season. Up to be lulled for a sacred reason. Okay? And then what comes? And here you mark the what you call punctuation impacts. Okay. Time is infinite, but breaths are few. To shine in optimism is the ray of hope anew. A life ahead I sketch with no cares, caring less for people and more for what the Lord declares. This poem, composed by Rashi Kumar, is an All India Radio Allahabad broadcast December 27, 2015. और 2015 में मैंने ये resolution poem लिखी थी, and it seems so real when we are facing this pandemic, COVID 2019, and I will post this poem as well. So thank you so much. That was all on voice modulation. If you have any doubts, I don't want you to have any doubts, but at all, if you have any doubts, I'm always there. Thank you so much. And my email ID for all my students, it's K all small KRASHI Rashi KUMAR KRashikumar@gmail.com. Right? Most of you have my phone number as well. Right? So bye and take care.